There are a lot of rumors floating around right now in the whole summer transfer window. Quite a lot of them are quite fun as well. Quite a lot of them are fairly ridiculous, and quite a lot of them are genuinely very realistic and scary if they were to happen for the other team. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं द बिगेस्ट ट्रांसफर रूमर्स राइट नाउ, एंड वी आर बेसिकली रेटिंग देम कि ऑन टू पैरामीटर्स. First is the likelihood of that actually happening. Second, if it happens, how big of a deal would it be for the club it will happen to? शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे ज्यादा वाइल्ड चल रहा है अभी मामला, दैट इज विक्टर ग्योकरेस, जो हमने पहले भी बात करी है कि भाई उसका एजेंट नहीं थक रहा, वो बंदा नहीं मान रहा, वो हर क्लब के साथ उसको लिंक कर दे रहा है। आज का सबसे बड़ा रूमर जो आया है, कल तक रूमर आ रहा था कि लिवरपूल इज इंटरेस्टेड इन विक्टर ग्योकरेस। आज रूमर आ गया है विक्टर ग्योकरेस हैज apparently told Manchester United कि I want to play for the club. तो शिवम भाई साहब, I have heard another rumor on that. हम्म, Just with his rumors, as he said, he's been linked to Liverpool. He's been linked to United for very obvious reasons. He has been linked to Arsenal, and the latest that I heard was that he prefers Arsenal, but is still open to United. He's what Victor Gyökeres and his agents are doing is they are playing keep, sell, bench type of situation with the club. My first preference is this. My second preference is this. He's been linked to. I just read it somewhere that Barcelona might consider him, सब or he might सबके साथ consider लिंक, Barcelona. So सबके basically, yeah, साथ लिंक, we know for सबके sure साथ that he's gonna move. Where लिंक। we'll get to see. I will link him first with United. I can see it happening, but I mean it's a strong link up. Because of his previous coach playing there. Still, because of Champions League, lack of Champions League, and because of the price tag, I think this might not go through. And ओके, I think Arsenal might be where he ends up if they don't sign. We'll talk about that again a little ahead if they don't sign anyone else. कूल। दूसरा मेरे ख्याल जो एक बड़ा रूमर आ रहा है, दैट इज अगेन नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स स्टैचर और द क्लब्स इन्वॉल्व। आई थिंक जो बड़ा रूमर है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो प्लेयर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करता है। अल्वारो मोराटा का एक आया है कि भाई गलातसराय से वो अब कोमो जाने के चक्कर में है। मतलब किसी ने लिखा हुआ था कि भाई यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट इन एवरी ट्रांसफर विंडो। No. एक तो अल्वारो मोराटा मेरे ख्याल से द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बनता जा रहा है धीरे धीरे। अब पता नहीं गलातसराय वाले क्या कर रहे हैं और कोमो वाले क्या कर रहे हैं। क्या लगता है रेक्स भाई, हो जाएगा ये भी? मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। It's Alvaro Morata. पर्सनल टर्म्स तो ग्रीडी है पहले ही। और अभी उसका मेन इश्यू ये है कि भाई गैलाटासराय के पे लोन पे है, वो लोन डील तोड़नी है, फिर उसके बाद एसी मिलान से बात कर, ये दोनों चीज। देखो ना भाई, वो एक ही क्लब में दो बार खेल चुका है, ट्रांसफर आउट ट्रांसफर इन करके। ये बंदा पहले ही होगा हिस्ट्री में। ठीक है भाई, अभी तो उसका इंटरनेशनल करियर तो खत्म ही है पूरा, जो लास्ट में किया है उसने स्पेन के साथ। और जाए मजे करे कोमो में, he might be एंजॉय in the करे World Cup सीरीज squad. का। We'll see. भाई We'll see. He might make it in the World Cup squad and all. Their lack of number 9 might. I think Sujay, what you said about the money laundering bit, I think that is spot on. I think that should be checked with Alvaro Morata. That needs to be checked. एक और आ रहा है तो ओके। अल्वारो मोराटा 8 on 10 likelihood and beneficial for Como. I think it might be a good signing. That is a project that is developing at this point in time. Might be able to do well for his experience. कोमो के लिए अल्वारो मोराटा रेटिंग खिला दिया था उन्होंने लास्ट सीजन। ठीक है वही मैं कह रहा हूं। 40 साल के बट पे रेना को फॉर कोमो रेटिंग आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 For Como, 9. हो जाएगा ये। 9. ओके। नहीं I can कोमो see के लिए that. बेनिफिशियल लाइक आ, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल तो है। देखो कोमो ना, मैं बताऊं कोमो इससे मतलब ओल्डीज को क्यों रिक्रूट करता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स उनके होते हैं भाई यंग प्लेयर्स। इसीलिए सेल्स फैब्रिकस क्या करता है, वो एक दो बड़े बड़े प्लेयर्स को ले आता है। इसी वजह से ही वो पेपे रेना को लेके आए थे। तो हाँ बेनिफिशियल तो है। दूसरा नेक्स्ट रूमर दैट इज बिल्डिंग अप फेयरली क्विकली इज चेल्सी इज इन फॉर अनदर विंगर। वो लोग अपेरेंटली बिड कर रहे हैं जेमी गिटन्स के लिए डॉर्टमुंड से, एंड 65 मिलियन यूरोस की बिड कर रहे हैं शायद वो लोग। Okay. हाँ लाइक्लीहुड
आई थिंक इट विल हैपन। चेल्सी के पास पैसा बहुत है, पता नहीं कैसे, बट बहुत पैसा है उनके पास, हो ही जाएगा। वो विंगर, एक और अपनी विंगर कर ही भैया लेंगे। मैंने बोला था ना विमेन्स टीम अपने आप 300 को ही मिलियन बेच का लेते हैं ऐसे है उनके पास 300 पैसा। मिलियन का रूम है इनके पास पीएसआर ये में, लो, ये तो लो। कर ही लेंगे ये लोग। तो ओके, जेमी गिटन्स, आई थिंक इफ दिस इज हाँ। हैपनिंग, आई थिंक हो ही जाएगा। If I'll say we can add one more rumor to it. Garnacho to Chelsea has also been publicized a lot, has been in the transfer rumors a lot. They will, if they are, that means they are going to go for winger. It could be Garnacho because he wants to stay, and if they give the money, we might end up selling. Or it could be Gittins. They're clearly looking for a younger winger by the profile. Let's see which one happens. I think Gittins is a little more probable because United wouldn't want to sell to a direct rival. Probably that's why. ओके, तो ठीक है, गिटन्स आ रहा है। एंड हाउ गुड ऑफ अ ट्रांसफर विल दैट बी फॉर चेल्सी इफ दैट हैपेंस? Can't say. I mean, with Chelsea, Not I can't much. say. I don't. Yeah, लेफ्ट विंगर है ना अपना ये, आउट ऑफ 10 बोलो। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से, 7. मेरे लेफ्ट ख्याल से। विंगर है ना ये। हाँ, हाँ लेफ्ट विंगर है, तो फिर इम्प्रूवमेंट तो है, सांचो के ऊपर खेलेगा वो। Sancho तो पहले ही गया. मुद्रिक जा Sancho चुका तो है आ अभी। गया. He will be मुद्रिक probably गया, सांचो गया, competing with अब तो कोई है ही नहीं। Neto, probably over हाँ, Neto, पेड्रो and नेटो। हाँ as a हाँ नेटो के younger, ऊपर नहीं खेल, शायद ना खेले नेटो के ऊपर। नेटो हैज बीन डूइंग not वेल। immediately, हाँ, but maybe a पर नेटो बहुत little ahead. इंजरी प्रोन है ना, तो Hmm. अच्छा ट्रांसफर होगा ये उनके लिए। ओके, Actually, for this reason, a little more for the future, he could be a good one. ओके। नेक्स्ट रूमर कौन सा सुना है जो वाहियात वाला और मजेदार वाला? एक क्लोज वाला बात कर लेते हैं. एम्बियोमो टू यूनाइटेड और स्पर्स. It's been that स्पर्स तो rumor. नहीं होगा, अब नहीं हो स्पर्स रहा. नहीं हो रहा। आई He's थिंक दे आर closer बीइंग to नहीं होना। United. I think सीम्स टू when we talked about Gyökeres to United, I think this is more closer. This sounds हाँ, more closer from what we're hearing. I think this might go through quicker. ओके। Good for both parties if it happens. Good enough. यार I'd say 7. नॉट गुड फॉर ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड बेचारे खाली हो रहे Not for नहीं, both parties as in Mbeumo and हैं। United, प्लेयर not for और ये, हाँ Brentford. हाँ, बट हाँ, लाइकलीहुड ऑफ दैट हैपनिंग आउट ऑफ 10 रेक्स। भाई Rex, you हो जाएगा ये 9 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई लिटरली फैन बॉय है वो यूनाइटेड का, उसको कहीं और जाना ही नहीं है, ओके। तो हो जाएगा इजीली। एंड I'd say 8 गुड maybe. फॉर यूनाइटेड, गुड फॉर यूनाइटेड। हाँ मतलब उनको गोल स्कोरर ही चाहिए ना, 20 गोल मारे हैं उसने लास्ट सीजन। ठीक है, देखते हैं क्या करता है वो वहां पे चाहे। देन Same. देयर 8 on all. दिस रूमर दैट इज कमिंग इन आर्सेनल का। फाइनली उनके रूमर्स आने शुरू हो रहे हैं। It's about time. दे आर आल्सो गोइंग फॉर अ ब्रेंटफोर्ड प्लेयर। ब्रेंटफोर्ड का Yes. क्रिश्चियन नॉर्गार्ड Norgard. एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द Partey. लीविंग The थॉमस departing पार्टे। Partey. Yes. तो It's a relatively likelihood, new rumor. and Yeah, आज ही likelihood. हुआ है भाई, एंड अपेरेंटली Exactly. आज ही रूमर आया है, एंड आज ही इट हैज पिक्ड अप अ लॉट ऑफ पेस। It has. Us एंड इट्स नॉट accordingly. अ वेरी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ मनी, इट्स नॉट दैट बिग अ साइनिंग। 15 मिलियन का कुछ है बिड। That's नहीं cheap. He's नहीं, not इसमें that भाई bad. 11 मिलियन Must be. यूरोस का है, 11 मिलियन यूरोस, नहीं, 15 मिलियन पाउंड देखा था यार पाउंड्स मैंने। भी नहीं, यूरोस। ओके, इतना चीप क्यों मिल रहा है ना? ठीक है, क्यों क्यों थोड़ा सा एज है यार, 30 इसीलिए 31 के आसपास इसीलिए है। क्योंकि वो 31 का है वो। हाँ, Okay. वही रीजन It's a है बस। midfielder and a midfielder to Arsenal. I can see it happening very डीप quickly. लाइंग मिडफील्डर, डीप लाइंग मिडफील्डर है। Yeah, if this भैया, rumor would have आर्सेनल been की for a मिडफील्ड striker, पूरी चेंज हो गई, देखो हाँ, पूरी चेंज हो गई उनकी मिडफील्ड, अभी न्यू लुक मिडफील्ड बन गई अभी। आर्सेनल का राइस, अनदर जुबिमेंडी अनदर और वेरी नॉर्गार्ड। स्ट्रॉन्ग अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर इज नॉर्गार्ड के अलावा जुबिमेंडी फॉर आर्सेनल। that's been अभी going तक on for a while. या वो एंड तो सी That ऑलमोस्ट हो rumor's ही been गया going है on since last year. पहले कह रहे थे कि मैड्रिड है बीच में, बट apparently the player has chosen Arsenal over Real Madrid. I don't know how, but it is happening, rumored to be. Likelihood क्या लगता है हो जाएगा ये वाला? हाँ, It's been going मुझे on तो since लगता last है year. ऑलमोस्ट डन ही है, ऑलमोस्ट डन है। Is it? I haven't heard about it as much recently. Norgard came up, and that has taken the center stage for Arsenal transfer rumors. If Arsenal were linked with a striker, it would never have happened till now. But since it's a midfielder, Norgard I think will happen most likely. Zubimendi, I know. If he has the Real Madrid option, we'll see. Apparently Fabrizio Romano ने तो बोला है कि he is coming to Arsenal, but
लास्ट ईयर सबने बोल दिया था कि ही इज कमिंग टू लिवरपूल, सो दैट इज अ प्लेयर यू कांट रियली ट्रस्ट पॉसिबली एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब तक उसे देख ना लो नए क्लब की शर्ट में, तब तक नहीं ट्रस्ट करना चाहिए उस ग्राउंड प्लेयर पे घूमते हुए। भाई आर्सेनल का एक और रूमर आ रहा है बाय द वे। आर्सेनल का एक और रूमर है एंड आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट टू मच, आई जस्ट वांट अ रेटिंग। Arsenal have a couple of fairly good keepers at this point. David Raya है and दूसरा वाला मैं उसका नाम भूल गया. He's also a good keeper. They are linked with Kepa. I read that too. Yes, I read that too. क्या करेंगे? क्या करेंगे वैसे केपा का? Honestly बोलूं, in terms of likelihood, 10 on 10. हाँ I'd have given it 8-9 myself. For some reason, can see it happening. Like Kepa would be fine with the bench. It just feels Arsenal, and be like, Arsenal is a club that can do this. हमें क्या चाहिए इस विंडो में? हमें सर स्ट्राइकर चाहिए। अच्छा, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो पिच के इस एंड पे खेलता हो। हाँ जी सर, कीपर ले लो। भाई हर सीजन के बाद उनका एक ही रोना होता है कि भाई एक स्ट्राइकर होता 20 गोल मारने वाला, हम जीत जाते। अभी देखो हर सीजन के बाद एक मिडफील्डर आता है, एक गोलकीपर आता है। मिडफील्डर तो हमने लेना ही लेना होता है। मिडफील्डर तो आर्सेनल को चाहिए, कुछ भी हो। फिर चाहे उसको स्ट्राइकर खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिडफील्डर तो आने दो। That's what. माइकल मोरिनो। That is one another और कौन से हमने सुने इंटरेस्टिंग वाले, मजेदार वाले? It isn't the biggest rumor, but Rashford he's to at Barcelona. Liverpool. Who? Which one? मैंने बोला राशफोर्ड टू बार्सिलोना। Rashford to Barcelona. वो ठंडा हो गया, वो ठंडा हो It गया। is. I know. I'd give it a 5 नहीं at the है moment. क्योंकि 5. बार्सिलोना एक चीज सुपर बताऊं इंटरेस्टेड है भाई, निको विलियम्स में एंड दे आर नॉट इवन हाइडिंग इट, सो इट्स नॉट इवन अ रूमर हाँ थिंग। लेकिन अभी रिपोर्ट्स ये है ना कि यूनाइटेड राशफोर्ड को लोन पे भेजने के लिए भी रेडी है, तो ये तो चांदी हो गई बार्सा के लिए, क्योंकि पेरिसिच तो वहां पे रुकने वाला है, इवन पेरिसिच, वरना वो अपना बेंच ऑप्शन होता। अभी राशफोर्ड आ जाएगा। राशफोर्ड तो भाई बार्सा आने के लिए भाई बोल रहा है मैं नंबर 9 में खेल लूंगा, मैं लेफ्ट में ही खेल लूंगा, राइट में ही खेल लूंगा, मुझे बस ले लो, फ्रीडम चाहिए उसे। अगेन दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तू तो खेल लेगा, खिलाएगा कौन तेरे को नंबर 9? सबने देखा है तू नंबर 9 पे क्या करता है। But I don't think that will happen unless I am not seeing that myself. I mean, it's very Nico wishful Williams का thinking डील from. पूरा ही मतलब fall apart हो जाए, I don't think that will happen at this point in time. मैं तो 6 out of 10 दूंगा। I think 5 मेरे लिए 5। At the moment. जो रूमर शिवम बोल रहा था अलेक्जेंडर इसाक टू लिवरपूल, I don't see it happening. Honestly, it will be a fantastic signing. At the moment, It is a tough. in terms of good for the club 10 on 10, but likelihood almost 2. 6, 5. Oh, it's that bad. 2. Yeah, Newcastle. See, he's contracted with Newcastle till 2028. Newcastle has Champions League. Newcastle have all the money in the world to offer him whatever he wants. It will take at least a 150 million bid to start a conversation, and even then Newcastle का कोई obligation नहीं है to sell. They are under no pressure whatsoever. And for a project that ambitious to let go of a player that good right now, I don't see that happening. I genuinely don't see that happen. And जिन owners की backing है न्यूकासल, अगर ये strike पे भी चला जाए तो भी न्यूकासल वाले बोलेंगे साले bet. I honestly likelihood 2 ही है मेरे लिए तो, honestly at this point in time. भाई आप बोल रहे हो बैठ जा, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई तू एक तेल का कुआं ले ले, बैठ जा यहाँ पे। fair. और कौन सा सुना है हमने मजेदार रूमर? डार्विन न्यूनेस टू नापोली। Apparently लिवरपूल इज आस्किंग फॉर 70 मिलियन यूरोस। भाई ये क्या चल रहा है भाई? देखो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे, देख लेना। अभी तक कोई बिड नहीं आई है, बट कहीं ना कहीं से तो मिल जाएंगे। नापोली नहीं दे पाएगी 70 मिलियन। I don't see that happening. Napoli has had a lot of transfer rumors. Nunez does seem unlikely because of the price tag. There is one more, another Garnacho rumor to Napoli. It's been going around since almost Jan this year. Garnacho का तो मेरे ख्याल वही सीन है, उसका एजेंट हर क्लब के साथ लिंक कर दे रहा है, देखते हैं कहाँ जाती है। हो सकता है हाँ, क्योंकि he is most likely not gonna stay at United. He won't stay. Probably the club doesn't want him either. So Napoli could be if they want a winger, like if they want a younger player. एक और चीज है, अगेन कंफर्म्ड बाय ऑल द टॉप जर्नलिस्ट एटलीस्ट। आई डोंट नो अगर क्लब ने अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी या नहीं। एसी मिलान जा रहा है लूका मॉड्रिच। This has been going on.
Yes, yes. सबने And फब्रिजियो रोमानो, डेविड सबने ऑर्नस्टीन, इन बोला सबने कंफर्म कर दिया है. ओके, तो फिर इट्स डन आई थिंक. हो रहा है वो। I think I that will can also happen. see this happening. One of the reasons is like since Zlatan moved into a sort of a role where he's been, I don't know what exactly his position is with AC Milan, but he's been part of the management and the backroom मैनेजर, staff and some हाँ, some like that. He, Hmm. as a player, when he came back to AC Milan, he came back with this philosophy, and AC Milan also backs this philosophy that you need slightly more senior individuals, winners Hmm. who can take Hmm. younger players forward. They tried that Hmm. with Giroud. Zlatan khud aaya tha. He was used as an example both on the pitch, off the pitch. Modric is absolutely perfect for that. Absolutely हाँ. perfect. Few players in the world of football would command as much respect as a Luka Modric. And if he doesn't want to move to Saudi, or if he doesn't want to move to US, if he still wants to play in Europe, I can see that happening. Very good for both parties. There is also a rumor going around that Liverpool are planning to put up Ibrahima Konate on sale because apparently contract talks have stalled and they don't want to lose him on a free next year. एक ही साल बचा है उसका contract का. And Madrid, being Madrid, I wouldn't put it past them to already turn his head around. So Mm-hmm. there is a chance. Again, rumor है. This is a Mm-hmm. completely wild rumor. There is no substantiation of it at all. But Okay. there is a rumor that they are putting up Konate for sale. How you must hate Madrid for even for this I have rumor at the always moment. hated Madrid. I have always hated Madrid. There has Even never more at been the a doubt. moment. Even more. They do that. पर्सनली They आई do थिंक that. ना They do सूर्य that भाई, with almost all मोर देन Premier League मड्रिड, clubs. They went to do that. मोर देन मड्रिड, पीएसजी कैन मेक इट हैपन, क्योंकि उनको इसको मार्किन्यूज को रिप्लेस करना है और कोनाटे भाई हाँ. बीइंग फ्रेंच तो वो नहीं, पहले अगर देखो, वहीं पे ही देखेंगे। अगर तो अभी मार्केट में डाल दिया उसे तो मे बी PSG माइट गो फॉर इट. हाँ हाँ बट अगर फ्री ट्रांसफर का हुआ तो फिर तो मड्रिड ही जा रहा है. मड्रिड हैज बिकम द हाँ, डेस्टिनेशन फ्री फॉर फ्री ट्रांसफर तो ट्रांसफर्स. भाई वो लोग एक एक दो दो साल पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं साले. Hmm. तो देखो, कोनाटे अगर इस सीजन गया ना तो आप लिख के ले लो, मार्क यही आ रहा है लिवरपूल, हाँ, वो तो वो और कहीं नहीं देयर जा इज नो रहा, वो डाउट. लिटरली देयर आ इज रहा नो है। डाउट. हाँ, देयर इज नो डाउट. और कौन सा है? रोमेरो का रूमर्स आ रहे हैं. आर दोस एनी? इज देयर Rudy एनी? Romero to Atletico आ रहा है ओके. rumor, लेकिन Hmm. Daniel Levy is clear on that कि हम्म. at the excess of 60 million pound, under that he will not even entertain the negotiation. तो 60 million के ऊपर दो पाउंड में, मतलब 80 million के 60 अराउंड, million 75-80 रोमेरो million। के लिए 60 million हाँ। भाई साहब. हम्म। That's a lot of money यार. That's a तो, lot of तो money. मुझे Daniel नहीं Levy लगता आता ये है. होने वाला है, एथलेटिको इतना पैसा नहीं दे पाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हाँ. नेक्स्ट सीजन वो, अगर एक्सटेंशन साइन नहीं किया उसने, नेक्स्ट सीजन वो चला जाएगा एज अ फ्री एजेंट। वो एक्चुअली शूट कर जाएगा एथलेटिको के फाइनेंशियल मॉडल को। तो ये नेक्स्ट सीजन होगा, इस सीजन नहीं होने वाला ये वाला। ओके, आई थिंक जाते जाते एक चीज की बात कर लेते हैं. दैट इज नॉट इवन अ रूमर एनीमोर, दैट इज अ कंफर्मेशन. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक्सटेंड कर लिया है अपना स्टे इन सऊदी अरेबिया एंड एट अ आई वाटरिंग कॉन्ट्रैक्ट अपेरेंटली. भाई कुछ 7 मिलियन पर वीक का ऐसा कुछ है उसका कॉन्ट्रैक्ट. 7 million per week. ऐसे कुछ है. Wow. मैं सोच के मतलब कितना होता है इतना. आई कांट इवन फैथम हाउ I मच don't इज think दैट so, मच. no? है Wow. ना? हाउ मच इज दैट मच. बट या very Okay. good for the Saudi Premier League if not anything else. If any, हाँ. And good for Let's Cristiano go. Ronaldo. इस एज में कहाँ ही जाना था उसने. He can keep banging goals there. वो जो एक रिकॉर्ड चेज कर रहा है वो हो ही जाएगा अब तो SPL में. But maybe his kid can play with him finally. Somehow, somewhere down the line. I Even think though Cristiano he should Ronaldo not had be said he there in won't Saudi. play, like he said he'll play till 40, at best 40, 41, like a couple of years back. I will not be surprised if he just decides to play till 50. Again, जब rumored तक 1000 contract ये गोल है. का नहीं हिट होता ना, वो नहीं करेगा, वो नहीं जाएगा। वही I'll just end this. मैं सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट जो रूमर्ड है एटलीस्ट वो बता रहा हूँ. 400 million euros per year, 33.34 million per month, 7.6 million per week, 1.1 million per day, 46,300 euros per hour, 772 per minute, 13 euros per second. तो बेसिकली 13 यूरोज इंडियन रुपीज में कितने होते हैं पहले ये बताओ मुझे. हाँ, तो 1300 रुपए पर सेकंड कमा रहा है वो. देयर इज ऑलमोस्ट फुटबॉल, देयर इज फुटबॉल गोटनेस, देन देयर इज मनी गोटनेस. There is
How much is he earning in a minute? यार अब इसी को into 60 कर लेना, Many. मैं बंद So how much was it per second? 7. What was 13 the Nine. figure? 13 euros 13 euros. 780 910. 780. हाँ 780. 780 in a minute. How long has this video been? How much has he 20 earned? मिनट How much has he earned in this time? Wow. 20 मिनट में हमारे इस बकर में वो भाई इतने पैसे कमा चुका है जितने हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करना चाह रहे। हाँ. लेट्स लीव यू ऑन दैट। यहाँ देखो 3 वेले लोग ट्रांसफर रूमर्स को रेट कर रहे हैं। I'll leave all of our viewers on that sad note. हम 3 वेले और बाकी आप लोग सारे लोग। इसी गम बांटने में लाइक कर दो प्लीज। खुशी का तो नहीं बोल सकता मैं, गम में ही। एंड वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, चैनल पे कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तो व्हाट रूमर यू फील इज द मोस्ट वैलिड वन एट दिस पॉइंट इन टाइम, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।